Most of us have heard this story before. An old man tells a young boy कि हर इंसान के अंदर दो वुल्फ्स हैं एंड दे कीप फाइटिंग ईच अदर. एक वुल्फ रिप्रेजेंट करता है एंगर, जेलसी, फियर, ग्रीड एंड ईगो. वहीं दूसरा वुल्फ रिप्रेजेंट करता है लव, कंपैशन, पेशेंस, काइंडनेस एंड विजडम. And the boy asks a simple question, which wolf wins? And the old man replies, the one you feed. And I must agree कि ये स्टोरी काफी सिंपल, पावरफुल और मेमोरेबल है, लाइक एनी अदर मोरल स्टोरी. एंड येट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ये स्टोरी कंप्लीट होती तो हम सब ऑलरेडी एक पीसफुल एंड बैलेंस लाइफ जी रहे होते. बट वी आर नॉट. सो टुडे आई डोंट वांट टू रिपीट द स्टोरी यू ऑलरेडी नो. और मैं आपको इसी स्टोरी का एक ऐसा वर्जन बताना चाहता हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना, so that you can draw your own conclusion. I am Mohit and I have been a writer for 10 years now, and recently I have published my book called Acting Right: Discovering Contentment Through the 5 Pillars of Dharma. I am a seeker and a student of Indian philosophy, and I want to help you navigate your life's challenges with the compass of philosophy in a practical way. So without any delay, let's begin. So let's be honest, feeding the good wolf and starving the bad one, अगर लाइफ इतनी ही सिंपल होती तो सेल्फ कंट्रोल से ही सब कुछ फिक्स कर देते. लेकिन जब हमारे आसपास देखते हैं, देन वी सी दैट पीपल हु मेडिटेट स्टिल फील एंगर, पीपल हु रीड फिलोसफी स्टिल फील एनवी, पीपल हु आर स्पिरिचुअल स्टिल स्ट्रगल विद डिजायर. सो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? द प्रॉब्लम लाइज इन हाउ वी इंटरप्रेट दोज वुल्व्स. हम अज्यूम करते हैं कि वन वुल्फ इज बैड एंड द वन वुल्फ इज गुड, एंड आवर ओनली जॉब इज टू किल द बैड वन. लेकिन कोई भी इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट कभी भी हमें अपने किसी पार्ट को किल करने नहीं बोलता. इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बैलेंसिंग एंड ट्रांसेंडिंग. सो लेट्स पॉज हियर एंड आस्क अ डीपर क्वेश्चन. व्हाट इफ बोथ वुल्व्स आर नेसेसरी? अब अगर हम सांख्य फिलोसफी की बात करें तो रियलिटी इज कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. पुरुष, दैट इज आवर प्योर कॉन्शियसनेस और द ऑब्जर्वर. प्रकृति इज द नेचर, मैटर, माइंड एंड इमोशंस. Prakriti expresses itself through 3 gun. Sattva, which means clarity and harmony. Rajas means activity and desires. Tamas means inertia and darkness. और अगर हम थोड़ा रुक के अच्छे से ऑब्जर्व करें और सोचें तो सांख्य रजस या तमस को कभी इवल नहीं बोलता. दे आर रिफर्ड टू एज फंक्शनल फोर्सेस. एंगर इज रजस, फियर इज सर्वाइवल ड्रिवन रजस मिक्स्ड विद तमस, लेजीनेस इज तमस एंड कंपैशन इज सत्व. So the wolves are not good or evil. They are the different configurations of प्रकृति. और रियल प्रॉब्लम शुरू होती है जब पुरुष अपने आप को प्रकृति से आइडेंटिफाई करता है. मीनिंग, when consciousness forgets it is the observer and starts believing I am my anger, I am my fear and I am my desire. And that's when the fight starts. Vedant on the other hand goes one step further and quietly dismantles the entire story. According to Advait Vedant, there are no 2 wolves. There is the mind and the witness of the mind. वो wolves simply mental patterns हैं, ना कि कोई entity. जब भी anger, compassion, fear या kindness जैसी feelings arise करती है, then there is something within us that watches all of it. And Vedant asks a blunt question. If you can observe both wolves, which one are you? And the answer is, we are neither. We are the awareness in which both appear. So the goal is not to feed the right wolf. The goal is to stop mistaking wolves for the self. और जब हम बुद्धिस्ट फिलोसफी को कंसिडर करते हैं, then it presents an entirely different idea of feeding. The Buddha didn't say feed good thoughts. He simply said observe. Buddhism के according, desires are the root cause of suffering. Desires can include craving for pleasure and craving to get rid of the pain. तो simply starving the bad wolf भी एक टाइप का रिएक्शन ही है. And reaction is feeding. यहाँ तक कि suppression भी feeding है. The moment we say I shouldn't feel this, we have already strengthened it. तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है? बुद्धिस्ट फिलोसफी इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन देती है, एंड दैट इज माइंडफुल ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट. बट यू माइट वंडर हाउ डज दैट वर्क? वेल, इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. व्हेन एंगर अराइजेस, सिंपली ट्राई टू नोटिस इट. डोंट जस्टिफाई इट एंड डोंट इवन सप्रेस इट. दिस वे द वुल्फ डजंट स्टार्व, इट लूजेस रेलेवेंस. Now when we come to Bhagavad Gita's message, अर्जुन का कंफ्यूजन whether to fight or not किसी inner good और bad wolf की वजह से नहीं था. He was confused because compassion pulled him one way while duty pulled him another way. And Shri Krishna didn't say kill your fear or suppress your emotion. He only said act according to your dharma without the attachment to its outcome.
इनडायरेक्टली श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस करना चाहते हैं कि लेट द वुल्व्स एग्जिस्ट बट डोंट लेट देम ड्राइव हिमसेल्फ। कठोपनिषद में एक मेटाफर आता है एंड आई रियली लव द वे इट्स यूज्ड। इट सेज दैट द बॉडी इज द चैरियट, द माइंड इज इट्स रेन, द सेंसेस आर द हॉर्सेस, आवर इंटेलेक्ट इज द चैरिटियर, while the self or the soul is the passenger. So the problem is not with the inner wolves, the problem is what holds the reins. And here is the version of the story no one tells you and I am about to tell you. Inside us are not two wolves, inside us is a forest filled with instincts, fears, virtues, desires, impulses and a silent observer walking through it. The observer doesn't feed, it doesn't fight and it doesn't choose sides. It just understands. And whatever is understood loses its power to dominate. The wolf that wins is not the one you feed. The wolf that wins is the one you stop identifying with. And that's something modern psychology also tells us. What you suppress doesn't disappear. It becomes unconscious. And what is unconscious controls you silently. Anger denied becomes passive aggression. Fear denied becomes anxiety. Desire denied becomes obsession. Which is exactly what Indian philosophy said thousands of years ago. And now that we have tried understanding the story of two wolves from the lens of various schools of Indian philosophy, अब टाइम है हमारी इस अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकल बनाने का. So next time any bad wolf arises in the mind, don't label it bad, don't justify it and don't suppress it. Instead, try to ask yourself, where is it coming from? What is it protecting? And what does it want me to see? And then try to act not from impulse but from clarity. This is known as Karma Yoga, this is mindfulness and this is maturity. And in the end, we need to understand that the story was never about morality. It was about awareness. The two wolves fight each other as long as the observer lets the mind take control. As soon as we awaken the observer, the fight becomes a conversation. And sometimes the wisest thing you can do is not feed any wolf at all, but simply watch them walk past. And as I conclude this discussion, let me leave you with a thought. Perhaps we were never meant to win an internal war. Maybe we were meant to outgrow the battlefield. If this video helped you reflect even a little, then take the time to sit with it. Thank you for being here. I truly appreciate it. Like this video if you found it insightful, as it will help me reach more people. Subscribe if you want to keep seeing more such video. I'll see you in the next video with another such topic to spark your curiosity. Till then, take care, be happy, be kind and remember Krishnam Sada Sahayate.